types of ordinates. There are two types of ordinates. Something called as horizontal ordinates, something called as vertical ordinates. So इसको एक नाम दे देते हैं x, इसको एक नाम दे देते हैं y. तो in horizontal ordinates, the ordinates given are parallel to the reference axis. So let us say आपको कोई बल्कहेड दिया हुआ है, ये बल्कहेड है, ये उसके ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द एरिया, वो तो आप निकाल लोगे. फिर कहता है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द जीसी फ्रॉम टैंक टॉप. तो you put your hand on the tank top. How do you find the orientation of the ordinates? How is the ordinates oriented towards the hand? They are parallel. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now you look at any of the questions that you have done so far. पीछे में जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं, कोई भी एक डायग्राम उठा लो और रेफरेंस एक्सिस पे अपना हाथ रखो and check the orientation. You will find a similarity. हमने अभी तक जानबूझ के एक ही टाइप के क्वेश्चन करे हैं. In all the questions, the ordinates given are parallel to the reference axis. We were intentionally doing one type of a question so far. चेक करो, कोई भी डायग्राम खोलो, चाहे WPA हो, चाहे CSA हो, कोई भी देखो, चाहे फिश डायग्राम देखो. Do you find this similarity? Yes, sir. सबने देखा? I want everybody to see it. Please, everybody to see what I'm talking about right now. Very, very crucial. It's very important for us. सबको मिल गया same answer? So what are the levers that we have been using so far? Levers used are 0H, 1H, 2H, etc. Agreed? Yes, sir. All right. That means अभी तक हम जो निकाल रहे थे ये x था. This is what we were finding out. इसको हमने x का एक नाम दे दिया. अब ये जो डिस्टेंस है, it's got nothing to do with the axis. Okay? ये एक्सिस से नहीं है, x एक्सिस की बात नहीं हो रही, ये डिस्टेंस की बात हो रही है.
डिस्टेंस को हमने एक एक्स का नाम दिया है. अब सेम क्वेश्चन में मैं आपको बोलता हूं, टेल मी द डिस्टेंस ऑफ द जीसी फ्रॉम द 4.5 सेंटर लाइन. अब रेफरेंस एक्सिस क्या है? 4.5 center line. Put your hand on the 4.5 center line. How do you see the orientation of the ordinates? Perpendicular. Correct. So the ordinates given are perpendicular to the reference axis. Now the question changes. Now the question is asking you to find out the distance y. इसको हम एक y का नाम दे रहे हैं. Again, nothing to do with the axis. ये डिस्टेंस y है. तो ये क्वेश्चन अब वर्टिकल ऑर्डिनेट्स का बन गया. इसमें levers used are the ordinate itself. That is column number 1 is equal to column number 4. जो ऑर्डिनेट है, दैट मीन्स ये वाला ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट ही लीवर बन जाता है. ये ऑर्डिनेट है, यही लीवर बन जाएगा. अब सपोजिंग आपको ये दिया हुआ है एक बल्कहेड, बल्कहेड की हाइट्स दी हुई हैं. क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द एरिया, वो आप निकाल लोगे. फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द जीसी and the distance of the GC from the tank top. Which distance, which method will you use? ये कौन सा डिस्टेंस है? x है y है? Y है सर. Y. Does everybody agree ये y है? ये y है. क्यों y है? रेफरेंस एक्सिस पे परपेंडिकुलर है. Perpendicular. रेफरेंस एक्सिस पे हाथ रखो, you will find the ordinates are perpendicular. तो इसके लिए लीवर क्या बनेगा? हाइट. लीवर क्या बनेगा? जो ऑर्डिनेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो हाइट दी हुई है क्वेश्चन में, वही लीवर है. लीवर यूज्ड आर द ऑर्डिनेट इटसेल्फ. इज दैट ओके? यस सर. अब यही क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द जीसी फ्रॉम द 4.5 सेंटर लाइन. अब ये क्या है? एक्स. ये एक्स. इसके लिए लीवर क्या होगा? 0HH. 0HH, 1H, 2H, 3H. इज दिस ओके? ये समझ में आ गया? यस सर एक्स का सर लीवर कैसे आया सर बता दीजिए.
एक्स का लीवर क्या क्या आएगा? एक्स कौन सा मेथड से करोगे? हॉरिजॉन्टल, जो अभी तक करते आए हो। ओके। तो लीवर कहां से लगेंगे? 4.5 सेंटर लाइन से लगेंगे, जहां पे हाथ है। सो 0h, इसका लीवर 1h, इसका 2h, इसका 3h एंड सो ऑन सो। अभी तक करते आए हैं वो सारे, जितने क्वेश्चन अभी तक करे हैं हमने, ओके सर। वो यही थे। एग्रीड। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 12 पे। With this fundamentals, let's come to example 12. Let's try to draw a diagram first. Example 12. Question कहता है vertical ordinates of a aft bulkhead of a port slop tank of a tanker measured from horizontal deckhead downwards, spaced at equal athwartship interval of 1 meter, are as follows. So सबसे पहले तो मुझे डायग्राम बनाना है. The vertical ordinates of the aft bulkhead of a port slop tank. So ये port slop tank है, ये पोर्ट साइड स्लॉप टैंक है, ये इसका टैंक टॉप है, ये इसकी कील है. इसके वर्टिकल ऑर्डिनेट्स हैं एज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डेक हेड. ये इसका हॉरिजॉन्टल डेक है, ये इसकी इनर बाउंड्री है, ये इसकी आउटर बाउंड्री है. स्पेस्ड एट इक्वल एथवॉर्टशिप इंटरवल, ये एथवॉर्टशिप इंटरवल कहलाएंगे. ऐसे 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 ऐसे. अगर इक्वल वर्टिकल इंटरवल होता तो ये ऐसे 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 होता. ये एथवॉर्टशिप इंटरवल है. और एज फॉलोज. सो पहला वाला तो 0 है, फिर दूसरा वाला 3.25 है, ये 3.25, फिर नेक्स्ट वाला है 4.4, ये 4.4 है, फिर 5.15, फिर नेक्स्ट वाला 5.65, फिर नेक्स्ट वाला 5.9, और लास्ट वाला है 6 मीटर्स. इसको ज्वाइन कर दो. ये मेरा पोर्ट स्लॉप टैंक बन गया. अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बल्कहेड फ्रॉम द इनर बाउंड्री. ये रहा इसका जीसी. इनर बाउंड्री, ये रही इनर बाउंड्री, ये आउटर बाउंड्री है, ये इनर है, ये इनर बाउंड्री का डिस्टेंस है. तो ये मेरा क्या है? कौन सा डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं मैं? y एक्स प्लॉट. ये x है, y है, क्या है? y है सर. वाई है सर. वाई. रेफरेंस पैरेलल टू रेफरेंस एक्सिस. रेफरेंस एक्सिस क्या है? इंटरनल, ये इनसाइड. इनर बाउंड्री. इनर बाउंड्री. तो इनर बाउंड्री रेफरेंस एक्सिस पे अपना हाथ रखो और चेक करो ओरिएंटेशन क्या है. सर पैरेलल आएगा ना सर? पैरेलल है. सबको X पैरेलल को. नजर आ रहा है?
यस और नो? इसमें गलती नहीं हो सकती बिकॉज पूरा मेथड गलत हो जाएगा अगर इसमें हमने गलती कर दी एक्स और वाई में. यस नो? ओके, नेक्स्ट वाला कहता है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द जीसी फ्रॉम द डेकहेड. ये डेकहेड है, टीटी. ये क्या चीज है? ये वाई हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस एक्सिस जब ऊपर हो जाएगी तो उसके परपेंडिकुलर तो चलेगा. बिल्कुल ठीक, ये वाई हो गया. ये समझ में आया कि नहीं एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट? एक बार बता दो सर दोबारा एक बार. भाई क्वेश्चन कह रहा है वही सेम चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी उसी को रिपीट कर रहा हूं अब मैं. फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द जीसी फ्रॉम द इनर बाउंड्री. इनर बाउंड्री कौन सी है? ये वाली इनर बाउंड्री है. पुट योर हैंड एट द इनर बाउंड्री और पुट योर पेन एट द इनर बाउंड्री. हाउ डू यू सी द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्डिनेट्स with respect to the pen? पैरेलल. So which method will you use? X sir. Similarly, find out the distance of the GC from the deckhead. Deckhead. How is the orientation? Perpendicular. Perpendicular. So which method will you use? Right. वर्टिकल. Vertical. ये है कहानी सारी. सारी की सारी कहानी एक्स और वाई पे घूम रही है. अगर हमारा एक्स और वाई ठीक है तो वी कैन मूव अहेड. और ये हमारा एच है. H is 1 meter given in this question. So this is a 2-in-1 question जिसमें x भी निकालना है y भी निकालना है तो लंबा बन जाता है. So ordinates from top. Same order 0, 3.25, 4.4, 5.15, 5.65, 5.9, 6.0. Which rule would you like to use? सर रूल 1. Rule 1. So put the SMs. Title of the third column. Area function. Multiply करो. And tell me the SOP1.
71.5 83 हाँ जी 83.3 83.3 83.3 book is solving it using rule 2. We'll solve it using rule 1. हमारे जो rules हैं priority वाले. ठीक है? Is that okay? Next, for finding x, lever from where? Lever about what? inner bulker. Yeah, inner boundary. Say using the same words, lever about inner boundary, IB. So the lever of 6 will be 0h or 0. So 6 का lever is 0h or 0. The lever of 5.9 from inner boundary is 1h or 1 meter. 5.65 will be 2h or 2 meters. 5.15 is 3h or 3 meters. 4h, 5h, 6. Are the levers okay with everybody? Yes, sir. All right. So multiply area into lever, what do you get? First moment of area function. First moment of area about inner boundary function. So इनको multiply किया and get SOP 208.2. 208.2 and H. H of course is 1 meter. Is everybody okay with SOP 2? For finding Y. Lever will be the ordinate itself. Lever is the ordinate itself. So इसी कॉलम को replicate कर दो 0, 3.25, 4.4, 5.55, 15, 5.65, 5.9, 6.0. Lever is the ordinate itself. अब एरिया को इस लीवर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी विल गेट फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया फंक्शन. दिस फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इज अबाउट टी टी. About tt. This into this 0. This into 3.25 something. This will give you SOP 3. You are multiplying area with this to give you this. This is what you're doing. एक बार सर हेडिंग बता दो ये क्या क्या लिखी है समझ में नहीं आ रही. मैं बोलता भी तो जा रहा हूँ साथ साथ. लीवर is the ordinate itself. So lever ordinate bracket में ordinate
first moment of area about TT function. SOP3 कितना आता है? फोर टू 6.15. सबका सेम आ रहा है? All right. Area is h by 3 into SOP1 is 1 by 3 into 83.33. 83.3. $27.766. 27.767 meter square is the area. First moment of area about inner boundary is h by 3 into SOP2 1 by 3 into 208.2 into h. $69.4, sir. 69.4. आगे कुछ और भी है? नहीं सर. ओके. इसके यूनिट्स होंगे
M3. Therefore, X is total first moment of area about inner boundary divided by total area. So X is equal to how much? टू पॉइंट फोर नाइन 2.49 मीटर्स, यानी कि X की मेरी वैल्यू 2.49 मीटर्स है, इतना। यहां तक कोई डाउट? एनीबडी? ये तो अभी तक हम करते आए हैं, जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे, हम ये एक्स ही निकाल रहे थे जानबूझ के। हम एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। अब वाई की बारी है। अब वर्टिकल ऑर्डिनेट्स का बात आ रही है। तो now note, please observe very carefully. First moment of area. About what? About TT. About TT is equal to half into h by 3 into SOP3. ये हाफ वर्टिकल ऑर्डिनेट्स में कांस्टेंट है, हमेशा लगेगा। ओके, जब भी वर्टिकल वाई निकालना होगा ये हाफ याद रखना, हमेशा आएगा। तो हाफ इंटू 1/3 इंटू 4 to 6.15. $71,025. 70,025 $1,025. सबका सेम आ रहा है? यस सर Okay. Therefore, y is equal to total first moment of area divided by total area. 71,025 divided by area. टू पॉइंट फाइव फाइव सेवन 2.55 7 या 8? एट सर 2.558. अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द thrust when the tank is filled up to the top with salt water. Thrust is depth into density into area. So depth क्या होगी इसमें?
6 मीटर. Sir, why? Okay. How much is your depth? 2.558. Correct. Absolutely right. So y will be used for calculating the thrust. 2.558 into 1.025 into 27.767. कितना आता है? $72.803. 72.803. So many tons is the thrust. So basically, what the book is doing is, book ना ये levers को आधा कर रहा है. I am trying to avoid that. कि अगर ये मेरे को लीवर को आधा करना है, तो मैं लीवर का पूरा लेके एसओपी को आधा क्यों ना कर दूं? दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. मैं पूरा का पूरा ले रहा हूं और फिर एसओपी को ही आधा कर देता हूं, तो बात तो एक ही आ गई. एग्रीड? यस और नो? Yes, sir. सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज दिस इज मच मोर सिंपलर. मैं यहाँ पे इसको आधे करने जाऊंगा, फिर मैं कोई ना कोई गलती करूंगा डेसिमल में, फिर लोचा होगा मेरा, फिर मेरी कैलकुलेशन में गलती आएगी, फिर मेरा एसओपी गलत हो जाएगा. तो मैं वही का वही यूनिट ले रहा हूँ, वही सीधा का सीधा ऑर्डिनेट है, उसी को कॉपी कर रहा हूँ ताकि इसमें गलती ना हो, और फिर एसओपी को आधा कर देता हूँ. तो ये मेरे लिए ज्यादा आसान है. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस इज व्हाट आई एडवाइज ऑल ऑफ यू टू डू. सो जस्ट याद रखना है, जब भी वाई ढूंढना होगा वर्टिकल ऑर्डिनेट्स, आधा हाफ जरूर याद रखना. हाफ किस लिए करेंगे सर इसको? बिकॉज एक्चुअली क्या है कि जब मैं ये जो ऑर्डिनेट को रोटेट करता हूँ ना, व्हाट इज फर्स्ट मोमेंट, इस ऑर्डिनेट को मैं यहाँ रोटेट कर रहा हूँ अबाउट टीटी. तो एक्चुअली ये ऑर्डिनेट का जो जीसी है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? ऑर्डिनेट बाय 2 पे. तो इसका लीवर क्या बन रहा है? ऑर्डिनेट बाय 2. हर ऑर्डिनेट का जीसी उसके ऑर्डिनेट बाय 2 हाफ पे होगा. जब मैं उसको रोटेट करूंगा तो उसका लीवर मेरा एक्चुअली ऑर्डिनेट बाय 2 होना चाहिए. मैं लीवर कन्वीनियंट है मेरे लिए, ऑर्डिनेट ले रहा हूं और फिर एसओपी को आधा कर रहा हूं ताकि मेरी कोई मिस्टेक ना हो. Yes, sir, got it. ये इसलिए. सर एक बार सर एसओपी 3 बता दिए सर, फर्स्ट मोमेंट वो लास्ट वाला कैसे आया था सर? ये वाला एसओपी 3 कैसे आया था? तो मैंने फॉर फाइंडिंग वाई, लीवर इज द ऑर्डिनेट इटसेल्फ. तो जो ये कॉलम था उसको रेप्लिकेट कर दिया. मैंने कहा था ना कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 4, बता रहा था आपको. यस सर, यस सर. तो सेम कॉलम को यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया. एरिया को लीवर से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को, तो ये मुझे मिला फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट टीटी. ये लीवर कहाँ इज अबाउट व्हाट? अबाउट टीटी, अबाउट द डेकेड. इट इज एज इफ मैं इस ऑर्डिनेट को घुमा रहा हूँ, इस ऑर्डिनेट को घुमा रहा हूँ, हर एक ऑर्डिनेट को घुमा रहा हूँ. तो इसका मतलब मैं पूरे बल्केट को घुमा रहा हूँ. ओके सर. सो दैट इज, और फिर इन सबको टोटल कर दिया तो 426.
ठीक है, इज दैट ओके? नाउ आई वांट यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 15 एट होम. अब आप 15 कर सकते हो. और 15 में केयरफुल रहना, 6 ऑर्डिनेट है, यानी कि कॉम्बो लगेगा. Sir, Yes, please go ahead. sir, can you explain once again if the breadths are given, like the ordinates of x and y? If in question breadths are mentioned, तो सर तो x एक्सिस एंड y एक्सिस सर एक बार बता सकते थे? ये एक्स एंड वाई एक्सेस नहीं है, सबसे पहले तो ये बात समझ लो. ये एक्सेस नहीं है, मैंने Sorry. बार बार एक ही चीज बोले जा रहा हूँ. ये डिस्टेंस है, एक्स और वाई डिस्टेंस है. Yes, sir. ओके, एक मिनट, जरा ये हैंग कर रहा है बार बार. हाँ जी, what you wanting me to change the question now, correct? Yes, sir. If breadths are given in the question, तो सर x and y एक बार. If breadths are given in a question, supposing ये डायग्राम है और ये ब्रेथ्स दी हुई हैं, ये ब्रेथ्स दी हुई हैं बल्कहेड की. क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द एरिया, वो तो आप निकाल लोगे. फिर कहता है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द जीसी फ्रॉम द बैकहेड और फ्रॉम द टैंक टॉप. तो ये क्या है? तो पैरेलल टू एक्स. बताओ ये क्या है? बेसिकली आप ये चेक कर रहे लगे परपेंडिकुलर है, उससे डिटरमिन हो. तो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, बस ये डिसाइड कर लो. सर पैरेलल टू द ऑर्डिनेट्स तो एक्स हो जाएगा सर. बस पैरेलल टू द ऑर्डिनेट्स एक्स है, ये परपेंडिकुलर टू द ऑर्डिनेट्स है, तो भाई Just that I want it from a time perspective. I know you do. No, just take a. In this kitchen and outside this kitchen. It would be absolutely please mute yourself. devastating if this is where my journey ends, because I don't want to leave until you try some of my Bengali sweets. Alok Kumar, please mute yourself. Yes, please. Thank you.
Is that okay? X and Y. All right. Please do question number 15, and then